Hello, my dear kids. Welcome back to Technology series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing maths of class 5. Children, this is your book, Joyfull Mathematics, and today we are going to start with a new chapter. This is chapter number 13 of your book, and the name of the chapter is Simple Interest. So let's start this chapter. Here you can see there's a piggy bank, as all of you may be having it. So in the piggy bank there are 1000 rupees and after a year, एक साल के बाद क्या होता है, अगर हम पिगी बैंक में पैसे डालते हैं, we get 1000 only. कोई भी एक्स्ट्रा इनकम हमें नहीं मिलती. बट इन द केस ऑफ बैंक, अगर हमने बैंक में 1 ईयर के लिए 1000 रुपीज डाले हैं, तो आफ्टर अ ईयर वी विल गेट 1050 रुपीज, विच मीन्स हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए. सो this extra amount or this extra money is called our interest. बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है क्योंकि हमने अपने पैसे को उनके बैंक में रखा हुआ है. Now if you deposit 500 in a bank for 1 year, अगर आप 1000 डिपॉजिट करते हो, you get 50 rupees. अगर आपने 500 rupees डिपॉजिट किए हैं, how much will you get after the period? So इस पूरे टाइम के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? This you have to find. Sometimes we need to borrow money from the money lender or a bank. कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है उधार मांगनी पड़ती है. Borrow means उधार मांगना पड़ता है अपने बैंक से या फिर किसी मनी लेंडर से जो पैसे उधार पे देता है. We promise to return it after a specific period of time. और हम कहते हैं कि हम इतने दिन बाद ये आपके पैसे रिटर्न कर देंगे. At the end of this period, we have to pay the money borrowed and some additional money for using the lending money. तो इस टाइम के बाद हमें क्या करना होता है? उस पैसे को रिटर्न करना होता है, ऊपर से कुछ और पैसे देने होते हैं उस मनी लेंडर को क्योंकि हमने उनसे उधार लिया था. So the additional money paid for having used another man's money is called interest. और ये जो पैसे हम उन्हें एक्स्ट्रा देते हैं उसे ये इंटरेस्ट कहा जाता है. So here some terms are given. Let's read what are them. What are they? So first is principal. The money borrowed is called the principal or sum. जो पैसे हम उधार लेते हैं उसे हम principal money कहते हैं या फिर sum कहते हैं. Second is amount. The total money paid back to the lender is called amount. और पैसे उधार लिए हमने, अगर मान लो 100 रुपए और हमने 110 रुपए वापस किए हैं, तो उसका मतलब वो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा थे वो हमें इंटरेस्ट के तौर पे उस पर्सन को देना पड़ा. तो ये जो टोटल अमाउंट है 110 रुपए का, 110 रुपीज का, वो है हमारा अमाउंट, जो टोटल अमाउंट हम उसे पे कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मींस 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज इंटरेस्ट. नाउ द नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सो हियर एग्जांपल इज गिवन. Interest on 100 rupees for 1 year is known as rate percent per annum. 100 रुपए पे एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा उसे ही कहते हैं rate percent. Thus we say that the rate of interest is 12% per annum. Means 12 रुपए एक साल में आपको इस 100 रुपीज पे देना पड़ेगा. Means 12% rate of interest है यहाँ पे. नेक्स्ट इज टाइम. द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड इज कॉल्ड द टाइम. वो टाइम, वो ड्यूरेशन जिसमें पैसे को बोरो किया जा रहा है, वो पूरा एक टाइम. मीन्स मैंने 3 महीने के लिए किसी से पैसे लिए या 6 महीने के लिए किसी से पैसे लिए या 1 साल के लिए किसी से पैसे लिए, तो उसे ही हम कहते हैं टाइम. सो ये जो ड्यूरेशन होता है पैसे का, इसे ही हम टाइम कहते हैं. एंड इट ऑलवेज इज written in years. इसे हम ज्यादातर years में ही लिखते हैं. Next is simple interest. Interest is calculated uniformly on the original principal. Interest को हम ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट कर पाते हैं throughout the loan period, पूरे लोन पीरियड के दौरान. Then the interest is called simple interest. इस इंटरेस्ट को हम simple interest कहते हैं. Here by the interest we shall mean only simple interest. So यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट लेट्स लर्न द फॉर्मूला ऑफ दिस. सो लेट प्रिंसिपल को हम P लिखते हैं
टाइम को हम t years लिख देते हैं, रेट को r% लिख देते हैं per annum. So the simple interest which is SI is given by the formula. इसका formula क्या है? SI is equal to P R T, means P multiply R multiply T upon 100. So this is the formula of simple interest. Now let's do this example number 1. Find out the simple interest on 10,000 for 1 year at the rate of interest is 5%. So यहाँ पे एक अमाउंट दिया गया है, आपको क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, टाइम दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है. अब तीनों चीजें हमें जब दी गई तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल इज 10,000, टाइम इज 1 year and rate is 5%. Now let's put this in this formula. P R T upon 100. So here principal multiply rate multiply time upon 100. So here the answer is 500 rupees. So 500 is the simple interest. Now example number 2 says Mr. Sharma deposited 1800 in a bank at the rate of 12% per annum. Mr. Sharma ने क्या किया? इतने रुपए उन्होंने बैंक में जमा किए. कितने रेट से? इतने रेट से. How much interest will he pay after 4 months? So 4 महीने and 15 days के बाद he will get कितना इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा? So उन्होंने 4 months और 15 days के लिए ये पैसे जमा किए हैं बैंक में. So कितना इंटरेस्ट मिलेगा? This we have to find. So principal is 1800 rupees. Rate is 12%. Now time is 4 months and 15 days. So we know that time should be in year. हमें पता है कि टाइम को हमेशा हमें क्या लिखना है? ईयर में लिखना है. So we convert 4 months and 15 days into year. तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे. And 1 month is equal to 30 days. तो इसीलिए 15 days को हम half month भी लिख सकते हैं. Now 4.5 month हो गया टोटल. अब इस 4.5 मंथ को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो लेट्स नाउ पुट ऑल दीज इन दिस फॉर्मूला. प्रिंसिपल लिख देते हैं 1800, रेट था हमारा 12%. अब टाइम क्या है? दिस इज द टाइम, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 100. नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 81 rupees as a simple interest. I hope this is clear. Now let's move on to exercise 13.1. So here the first question is, fill in the blanks of the given table. Principal is given, rate, time, simple interest is also given. So in the first question, question number A, we have been given principal, time and interest is given. We have to find this rate. तो हमें जो है rate find out करना है. So as we know the formula is P R T upon 100. तो principal लिख देते हैं 5000 multiply by rate is not given तो rate के लिए R ही छोड़ देते हैं. Time is 4 years upon 100 और ये है 1000 के equal. So now let's simplify this. Simplify किया हमने तो ये बचा 50 multiply 4 multiply R is equal to 1000. Our 50 multiply 4 is 200. R is equal to 1000. Now R को हम यही छोड़ देंगे. अब because 200 multiply R है तो 200 जो है 1000 के नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. सो ये इट विल डिवाइड 1000. अब जब हम इसे डिवाइड करते हैं वी विल गेट 5. सो रेट इज 5%. तो यहाँ पे जो रेट आया वो है 5%. लेट्स राइट इट हियर. सो दिस इज द वे चिल्ड्रन यू हैव टू डू द क्वेश्चन. Now let's move on to the next question. Question number B. Here you can see that principal amount is given, rate is also given. You have to find out the time find out करना है, and simple interest is also given.
So let's put in the formula 15,000 multiply 8 multiply time upon 100 is equal to 7200. अब हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे. So now the answer is 150 multiply 8 multiply t is equal to 7200. अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे. So we will get 1200 t is equal to 7200. अब t is equal to 7200 upon 1200 क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. So here let's solve this. So on solving we will get 6 as the answer. So here the total time is 6 years. So 6 years we have to write. Similarly, children, you have to find the answer of the rest of the questions that are given here. Now let's move on to question number 2. Find the simple interest. So here for finding the simple interest, principal, time and rate is given. So first the formula is in front of us. Write down 3000 multiply 2 multiply 5 upon 100. So we will get the simple interest. So अब इसे हमने solve कर दिया है. So here children we are going to get 489.70 which will be rounded off to 490 rupees. So this is the answer, 490 rupees. Now let's move on to the next part. The rest two questions, question number 5 and 6, you have to do on your own, like this only. Now, what is amount? Amount is the total money received at the end of the time period. So इस पूरे टाइम को कंप्लीट होने के बाद जो टोटल अमाउंट मीन जो पैसे मिल रहे हैं उससे ही हम अमाउंट लेते हैं. So amount is equal to principal plus interest. Let's learn this with an example. Here Sunil borrows 3,000 from the bank for 4 years at the rate of 11% interest. So सुनील ने क्या किया, बैंक से उधारी ली उसने 3,000 रुपए 4 सालों के लिए और इंटरेस्ट क्या था 11%. How much interest does he pay for 4 years? 4 सालों तक उन्होंने कितना पेमेंट की है इंटरेस्ट की. And what is the total amount he pays back to bank at the end of 4 year? और 4th year में उसने कितने पैसे बैंक को दिए. So principal is given, rate is given and time is given. अब हम सबसे पहले simple interest निकालेंगे. For that we have multiplied all these together. We have put this into the formula. So here the simple interest is 1,320 rupees. अब amount को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? This formula we are going to use principal plus interest. So principal था 3,000, interest है 1,320 rupees. दोनों को ऐड किया. So the total amount that he pays to the bank at the end of 4 years is 4,320 rupees. Now children, let's do this exercise 13.2. So here the first question is given, principal is given, rate is given and time is given. Let's calculate the simple interest first. Amount we have to calculate. So let's calculate the simple interest. So simple interest is PRT upon 100. So principal is 800. Rate is 6% and time is 3 years. So now let's calculate 8 multiply 6 multiply 3. So here the rate of interest is 144 rupees. Now as we know the rate of interest is 144 rupees. Let's calculate the amount. So amount is equal to principal plus simple interest. So principal amount was 800 rupees plus the rate of the simple interest was 144 rupees.
So here the total amount will be 944 rupees. This is the answer. Similarly, you have to do the rest two questions. Now here, the next question is find the simple interest on this for the year, this and the rate of interest is this. So here the principal is given, time is given and rate is given. So what you have to do? You have to find the simple interest only. I think this you can do on your own. Now, question number 3 is Mr. Behel, a business tycoon, invested this much rupees in a bank at 15% rate of interest. So, Mr. Behel ने एक business tycoon है, उन्होंने इतने पैसे जो बैंक में लगाए हैं और 15% rate of interest है 5 years के लिए. How much simple interest he will get? तो उन्हें बैंक कितना interest देगा? So, we have to use this formula PRT upon 100 and then we can calculate the simple interest that he gets. Question number 4 is if the interest on a certain sum of money is for 7 years is this much. अब यहाँ पे हमें simple interest दिया गया है. Find the money rate of interest being is 10%. So यहाँ पे let's do this fourth question. अब यहाँ पे simple interest is equal to PRT upon 100 दिया गया है. Simple interest is 168 rupees. And we have to find the money, means we have to find the principal. Now, rate of interest is 10%, and time is total 7 years. So, let's calculate. अब आप देखोगे this by cross multiplication it will go like this. So, here the number will be 168 multiplied 10 upon 7 is equal to principal. So here the amount that we get is 240 rupees. So 240 rupees is the principal amount. Now question number 5 says Mr. Khan borrowed rupees 7,000 from a bank at 12% simple interest. Mr. Khan ने 12% के simple interest पे इतने रुपए लिए. So this is the principal, this is the rate. After 3 years, he paid the money back in full. 3 सालों के बाद. So यहाँ पे time is given. How much interest did he pay? So we use this formula and calculate the simple interest. On the deposit of 3,000, Swami received at the end of 1 year this much rupees. So इतने पैसे उसने जमा किए थे कितने सालों तक? 1 साल तक. उसे last में इतने रुपए मिले. What is our interest? So this is our amount. This is our principal. So, जो है first let's calculate the simple interest. So simple interest calculate करने के लिए हम क्या करेंगे? Amount minus principal. So amount 30 minus 3,000. So यहाँ पे जो simple interest उसे मिला है वो है 450 rupees का मिला है. अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो इस फॉर्मूला में हम लगाएंगे क्योंकि वी नो द सिंपल इंटरेस्ट, नाउ वी नो द टाइम एंड वी आल्सो नो द प्रिंसिपल. सो इस फॉर्मूला में लगाना है एंड वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट. So children, with this the chapter is over. I hope that you have understood this chapter simple interest very well, and you have to complete the exercises given to you as homework. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.